आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is on comprehension. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blank with the help of the alternative given. Select the most appropriate option for each blank. One fireman died and 14 others had a narrow escape when a part of a factory-cum-outlet of a well-known battery firm where they were battling a major dash collapsed, following a series of sudden explosions in West Delhi. Now we need to fill in the blank number 2. Therefore, I am not reading further. As in this kind of question, what we do, we finalize the answer by just judging the line that contains a blank number 2, right? Now, what does this passage means? So question तो बोल रहे देखो एक कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें हमें एक पैराग्राफ गिवन होगा, वर्ड्स को रिमूव किया जाएगा एंड उन वर्ड्स को हमें फिल करना है वापस से बाय द अवेलेबल ऑप्शन। अब पैसेज का क्या मीनिंग है कि एक फायरमैन मर गया एंड बाकी 14 ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कैसे? एक बैटरी फर्म थी, एक बैटरी कंपनी थी जिसमें सडनली एक आग गिरी और उसके गिरने की वजह से बहुत ही ज्यादा सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन हो, लाइक वो बढ़ती गई इन वेस्ट दिल्ली। सो दैट वाज अ बिग एक्सप्लोजन जिसकी वजह से एक फायरमैन वाज डाइड एंड 14 अदर्स हैड अ नैरो एस्केप। Now, before judging the final answer, let's first understand the meaning of each option. Fracture simply means break in bone. Trouble means difficulty in life. Something which we need to worry about. Or problem. What do we mean by blaze? So blaze means a large plus a dangerous fire. What do we mean by ruin? Ruin means damage something badly. किसी चीज को खराब कर देना. Now let's read the sentence and judge which of the options are suiting the sentence. So blank number 2, so this is the line where they were battling a major dash collapsed. तो वहां पे लोग लड़ रहे थे जिसकी वजह से मेजर एक चीज कोलैप्स हो गई और उसके गिरने की वजह से बहुत ज्यादा सडन सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन हुआ. So it can't be fracture. Fracture is not even going with the sentence or the paragraph meaning. Trouble, no, that won't be a trouble. There was a battling, that was a trouble, but trouble गिरने के बाद there was a series of sudden explosion. This is also not going with the passage. C option is correct one. Why? Because एक आग गिरी और आग ने पकड़ लिया तो वो बढ़ती गई एंड उसकी वजह से डैमेज हुआ, पर बढ़ाया किसने? गिरी क्या? आग गिरी. So D is suiting with the sentence but it's not going with the passage. So D also gets rejected. So the correct answer of this particular question is option C, that is blaze. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।